Hi friends, welcome to my channel and kitchen Delish and Relish. We will make red sauce pasta today. So we need a pan. We will add olive oil या हम refined oil भी डाल सकते हैं इस पे on medium low flame and we will add chopped onions into it. Let it simmer for 10 to 20 seconds and then we will add crushed garlic. आप चाहो तो इसको स्लाइस करके डाल सकते हो, चॉप करके डाल सकते हो, बट मुझे क्रश्ड पसंद है, सो आई हैव एडेड क्रश्ड garlic into it. We will saute it for around 5 to 7 minutes till the time it turns translucent. इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है. जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, एग्जैक्ट यही टेक्सचर, वी विल ऐड रेड चिली फ्लेक्स एंड चिली पाउडर. घर में बच्चे खा रहे हैं तो आप मिर्ची कम कर सकते हो. We will saute it for 10 to 15 seconds so that it blends well with onion. And now I'm going to add tomato puree. मैंने 7-8 अच्छी क्वालिटी के रेड टमाटोज़ लिए और मिक्सी में ब्लेंड कर देना है. Now we will add salt according to taste. एंड केचप सॉस. आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो. आई हैव यूज मैगी का सॉस, टमाटो सॉस एंड मिक्स वेल. सो यू कैन सी अ रेड कलर हैज़ कम एंड हमारी रेड सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो रही है. येस, दिस इज़ द कलर विच वी वॉन्ट फॉर आवर रेड सॉस पास्ता. वी विल कवर इट एंड हाई फ्लेम में मैंने इसको पकाया है फॉर 7 to 8 मिनट्स. एक बार स्टर करेंगे इसको हम सो दैट ये बेस में ना स्टिक हो. एंड नाउ आई विल ऐड oregano. एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर. आप चाहो तो इसको मिस कर सकते हो, ऑप्शनल है अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद, बट रेड सॉस पास्ता इज़ ऑलवेज लिटिल स्पाइसी. सो now I will add my boiled pasta into it. You can use any, I have used fusiform, you can use penned pasta या आप मैक्रोनी को भी बॉयल करके यूज़ कर सकते हो. And coat it well. So you can see your red sauce pasta is ready, full of flavors. Yummy. Friends, don't forget to open the description box where I have mentioned the detailed ingredients and method to make this red sauce pasta. And if you're liking my recipe, don't forget to like, subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy your red sauce pasta.